Good morning, my dear students of class 3. Today we are going to start with our lesson 12 of English grammar, a and the. Now, before jumping into the topic, first of all, right from the beginning, I would first like to ask you a question. Right from the beginning, you have learned this English, है ना? English, we have learned that there are 26 letters in English. Now 26 letters in English are not, all of them are not same. Now some of them are vowels, okay, and some of them are consonants. Before doing a and the, that what is a and the in English, we will first learn that in English we have 26 letters. We have 26 letters, and those 26, among those 26 letters, they're not same, they're not altogether same, their pronunciation is different, their formation different. So few of them are vowels and few of them and rest of them are consonants. Now first of all, we will learn that what are vowels. In English, we have how many vowels? We have 5 vowels in English. How many vowels we have? We have 5 vowels in English. How will you learn? How will you learn that how many vowels are there and what are these vowels? How can you learn this? You can learn this in this way. Like I'm showing you this one. We have hands. Yes, we have 2 hands. And how many fingers we have? We have 5 fingers in one hand, isn't it? So these are my fingers. Now you can see what have I done? I have written these vowels on my fingers. Understood? How can you learn? You can also write. Okay, this is little fun. इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको ऐसे लर्न करने में. अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको लर्न करने में यू विल फाइंड इट फन एंड यू विल लर्न मोर ईजीली. अंडरस्टूड? सो how many vowels are there in English letter? We have 5 vowels. A first. Understood? A second. E. Okay. E third. I. Third, I. Fourth, O. Fourth, O. And last is U. Understood? How many vowels we have in English? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Now, how can you, and rest of the letters are consonant. Rest of the letter except these 5 are consonant. Now how can you learn this? Means how can you make it out that कैसे हमें पता लगाना है that these are vowels and these are consonant. Now when you pronounce, जब आप बोलते हो, जब आप इन letters को बोलते हो, you might have noticed that vowels, जितने भी vowels हैं हमारे पास, जितने भी vowels हैं, whenever we are speaking it, whenever we are speaking the letter, we see that our tongue doesn't touch either the upper portion of our mouth. Okay, our lips doesn't meet, isn't it? Our lips doesn't meet. Now for example, A, we are saying A, हम A बोल रहे हैं. For example, if you want to differentiate, first of all, B. Now B is not a vowel, it's a consonant. Now B, when you speak up B, आपके लिप्स, ऊपर के दोनों लिप्स और नीचे के लिप्स, ऊपर के लिप्स और नीचे के लिप्स टच हो रहे हैं. बी. सी, आप सी कैसे कह रहे हो? सी, द टंग, आपका जो टंग है वो ऊपर थोड़ा सा टच करेगा आपके ऊपर वाले पोर्शन को. ठीक है? सी. डी, ड, डी, आपका जो टंग है, फिर अगेन इट इज टचिंग द अपर पोर्शन ऑफ योर माउथ. ठीक है? डी. नाउ ई. ई, दिस इज कमिंग राइट फ्रॉम योर थ्रोट. ठीक है? ए. ए में आपका जो लिप्स है
वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। आपको जो टंग है वो भी टच नहीं कर रहा आपके मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट को, ना टीथ को, ना आपके अपर पोर्शन को, ठीक है। आई, व्हेन यू प्रोनाउंस आई, आई, our tongue, my tongue is not touching the teeth, it's not touching the upper portion, and also my lips are not meeting. O and U, understood? So those letters, when we pronounce or when we speak those letters, and when our lips are not touching the upper portion of our mouth or our teeth, or when our lips are not meeting up, they are vowels, understood? Rest all letters are vowels, like J, J, see, J, J for jar, J for jug, J, your tongue is touching, आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले पोर्शन को टच कर रही है, ठीक है। बट A E I O U, ये जो लेटर्स हम बोलते हैं, जब हम इनको बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक अप, द दीज पार्ट, द ना हमारी जीभ टच कर रही है ऊपर के पोर्शन को, ना वो हमारे दांत को टच कर रहे हैं, ना वो हमारे लिप्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली, यू हैव टू लर्न इट, एंड आई गिव यू द आइडिया हाउ कैन यू लर्न इट, राइट, लाइक दिस, AEIOU, AEIOU, understood? This way you can learn it. Now we have five vowels, and rest of the letters are consonant. Now we have learned this, that in English we have 5 vowels and consonant. Now what are those vowels? We have learned that also. AEIOU, you have to learn it, AEIOU, AEIOU, and rest of the letters are consonant. Now what are articles? What are A and the? Now A and the को हम क्या बोलते हैं? In English we call them articles. In English we call them articles. Why do we call them articles? Now what is the literal meaning of articles? आपको word, आप जब इसको डिक्शनरी में articles का meaning ढूंढने जाते हो, when you try to search the meaning of the word articles in the dictionary, you find that articles, it means it's a particular item. For example, this is an article, pencil, article, okay, understood? Page, this is a page, this is the article. Then book, this is the book, understood? So these are articles, Now A and the को हम क्यों article बोलते हैं? Why do we call A and the articles in English? Because they suggest, they refer to things, ठीक है, to things, जो हमारी चीज़ें होती हैं वो उनको रेफर करती हैं, ठीक है। दे द आर्टिकल, दीज वर्ड्स A and the, they refer to those things, and those things, items, we call them, because in English we call them articles, understood? So first is article A. Now what is article A? Now article A, we use article A we use it to suggest any one person or thing, okay, any one person or thing. It can be anything, it is not particular, it can be anything. For example, if I say bring me a book, if I ask you bring me a book, it can be any book, मैंने आपको specify नहीं किया, bring me a book, ठीक है, bring me a book, it can be any book. Now here I have written this book can be any book, because it can be any book because it is not definite, understood? Then article A is used before words beginning with a consonant sound, understood? Now A is used before words beginning with a consonant sound. We have done vowels and consonant. Now whatever words not starting with this, okay, we will use this article A before them, understood? I hope you are understanding. For example, a table, a bench. Now B is a consonant, T is a consonant, a table, a bench. I hope you are understanding. A table, a bench. Now coming to the third. Now A
Article A is indefinite article. Why this is indefinite article? Definite is specific, particular. किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है. एंड वाई इट इज़ इंडेफिनिट? बिकॉज इट डजेंट स्पेसिफाई. ये किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू ब्रिंग मी अ बुक. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग यू. मैं आपको प्रॉपर नहीं बता रही कि मुझे कौन सी बुक चाहिए. आई एम जस्ट आस्किंग ब्रिंग मी एनी बुक, ब्रिंग मी अ बुक. इट कैन बी एनी बुक. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एन indefinite article. I hope you have understood. It is used to suggest any one person or thing. ठीक है. It can be any. It can be any. It will not be a special one. It can be any. Then it is used before those words which starts with a consonant sound. Which starts with the consonant sound. Understood? And it is a indefinite article. It is an indefinite article because it doesn't specify. इट डजेंट स्पेसिफाई. ये स्पेसिफिकली एक चीज़ के, एक स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं बोल रही. इट डजेंट स्पेसिफाई. इट जस्ट टेल्स अबाउट एनी थिंग. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. आई एम वेयरिंग अ शर्ट. आई एम वेयरिंग अ शर्ट. इट कैन बी एनी शर्ट. इट कैन बी शर्ट ऑफ एनी कलर. आई एम वेयरिंग अ शर्ट. And I hope you are understanding this. Now coming to the second. Now the second article is an. Article an. Now article an is also the same thing. It suggests one person or thing, just like article a. Understood? But what is the difference? An is used before words beginning with a vowel sound. Now यहाँ तो consonant था. Now an is used before the words beginning with the vowel sounds. जो हमारे ये जो vowels हैं, हमारे 5 स्पेशल वर्ड्स जो हैं AEIOU, जिनको हम जब प्रोनाउंस करते हैं, एट दैट टाइम वी जस्ट सिंपली प्रोनाउंस इट एंड आवर साउंड्स कम्स राइट फ्रॉम द, हमारे गले से आवाज़ आती है. अंडरस्टूड? हमें अपनी टंग को इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है. हमें अपने लिप्स को टच करने की ज़रूरत नहीं है जब हम उसको बोल रहे हैं. व्हेन वी आर स्पीकिंग अप AEIOU, हमारी वो सीधे गर्दन से, गले से आवाज़ आ रही है. अंडरस्टूड? AEIOU. Why I am repeating this? So that you learn it. कि हमारे जो वॉल्स हैं वो ये होते हैं. Understood? It is this. So when the words we use this article an before those words which starts with a vowel sound. For example, an egg. We don't use a egg. This is a vowel. E is a vowel. So an egg. An orange. We don't use a orange. We always say an orange. Understood? Now same way an is also an indefinite article. An भी हमारा indefinite article है because this is not specifying any specifically or any special person or article or any person or thing. Understood? It can be any when we use it. Understood? I want to eat an ice cream. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि वो आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की होगी. अंडरस्टूड? व्हेन आई स्पीक आई वांट टू ईट एन आइसक्रीम. अंडरस्टूड? देन कम्स द आइसक्रीम शुड बी मैंगो फ्लेवर्ड. अंडरस्टूड? सो आई एम नाउ स्पेसिफाइंग कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो आइसक्रीम चाहिए जो मैंगो फ्लेवर वाली हो. अंडरस्टूड? सो दिस वी विल डू फर्दर द आर्टिकल द, विच इज़ डेफिनेट आर्टिकल. ये दोनों इंडेफिनेट है. इसमें कोई स्पेसिफिकली किसी भी स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं बात की जाती है. उस टाइम पे हम उस टाइम पे हम ए एंड एन, वी यूज़ ए एंड एन. Understood? Why I'm explaining you in Hindi also, so that you understand. Understood? Otherwise this is an English class. I'm explaining you in Hindi also so that you understand.